Insurance sector is made up of companies that offer risk management in the form of insurance contracts. The basic concept of insurance is that one party, one insurer, will guarantee payment for uncertain future event. So एक party जी insurance company असते ज्याला insurer म्हटलं जातं, it guarantees that if something bad, something uncertain happened in the future, they will make up for our loss if we are taking the insurance. Meanwhile, another party, the insured or the policy holder, pays a smaller premium to the insurer in exchange for that protection on that uncertain future occurrence. So to make that contract viable, or to make that contract very holding it very soundly, the insured party, that is we, as we are taking insurance, or the policy holder, we pay small amount of premium of insurance in exchange for that secured coverage. Okay, just a minute, sorry. As an industry, insurance is regarded as slow growing, safe sector investors. In the sense, insurance is always not with so much risk. Okay, that's why investment in insurance is always, though it is slow growing, बहुत ही slow grow कर रही है, फिर भी ये safe मानी जाती है. This perception is not as strong as it was in 1970s or 80s, but it is generally true when compared to the other financial sector. So when we see shares, options, equities, and all those things, compare with them, insurance is called as a risk averter option. Okay, let's see. The insurance industry of India has 57 insurance companies. 24 are in life insurance business, while 33 are in non-life insurers. Okay, 57. I know in your book there are other number of companies, but I am giving you updated number. Okay, your book is from old date. So अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें से आंसर लिखना है, नॉट फ्रॉम योर बुक, बिकॉज दिस वन इज द अपडेटेड नंबर फॉर 2020. Okay, the insurance industry of India has 57 insurance companies. 24 are in the life insurance business, 33 are in non-insurance business. Among the life insurers, life insurance company LIC is the sole public sector company. In the sense, एकटी पब्लिक सेक्टर कंपनी तिच्यासाठी वेगळा वेगळा ऍक्ट केलेला आहे, LIC ऍक्ट, आणि त्याने ती बनलेली आहे. ओके, देर आर 6 पब्लिक सेक्टर्स इन्शुरर इन द नॉन लाईफ इन्शुरन्स एजंट. सो नॉन लाईफ इन्शुरन्स मध्ये 6 पब्लिक सेक्टर कंपनी आहे. In addition to these, there is a sole national reinsurer, namely General Insurance Corporation India, GIC, RE. Other stakeholders in India insurance market include agents, individual or corporate, brokers, surveyors, and third-party administration servicing health insurance system. So हे जे LIC किंवा नॅशनल इंडिया इन्शुरन्स किंवा अशाचे जे लोक असतात ते सर्व करतात ऍज अ इन्शुरर पर्सन. ते रिप्रेझेंटर असतात या कंपनीजचे. ते मे बी एखादी फर्म काढलेली असू शकते त्यांनी, आणि ते रिप्रेझेंट करू शकतात. दे मे बी ब्रोकर्स, दे मे बी सर्वेयर्स, दे मे बी थर्ड पार्टी ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह. ओके, या. सो एक्झाम्पल ऑफ नॉन इन्शुरन्स कंपनीज इंडिया, कारण आपण नॉन इन्शुरन्स तर आपल्याला माहितीये LIC सारखी लाईफ इन्शुरन्स वाली, पण नॉन लाईफ इन्शुरन्स मध्ये इंडियामध्ये काही एक्झाम्पल बघा. स्टार हेल्थ अँड अलाइड इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, अपोलो म्युनिच हेल्थ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, आणि अशा बऱ्याच आहेत. मी जस्ट तुमच्यासाठी 2 ड्रॅग डाऊन केल्या तिकडे. ओके, सो दिस इज अबाउट इन्शुरन्स इंडस्ट्री इन अ स्मॉलर ग्लान्स. Let's say what your book says about it. Recent trends in the insurance company. Despite being over 30 players, the industry is still under-penetrated. म्हणजे अजूनही खूप जास्त स्कोप आहे इन्शुरन्स सेक्टर मध्ये. In the general insurance sector, the penetration level is just about 0.65%. So, जनरल इन्शुरन्स म्हणजे ज्यात नॉन लाईफ इन्शुरन्स जास्त प्रमाणावर येतात, मोटर, फायर, हेल्थ, सो ह्याच्यात पेनिट्रेशन फक्त 0.65%
दिसतं, विच इज व्हेरी लो. जे 100% 90% दिसायला पाहिजे. द इयर 1516 will assume a significant position. Again, the book is older one, okay. The year 1516 will assume a significant position in history of Indian insurance industry. It denotes completion of a decade of open market, ending of oligopoly, and entry of private sector insurance companies, and the regime of a new development oriented regulatory authorities, that is IRDA, Insurance Regulatory and Development Authority. Okay, so या सगळ्या गोष्टी 1516 अहेड होणं अपेक्षित होतं. त्यात काय काय येतं? इट डिनोट्स कम्प्लिशन ऑफ डिकेड ऑफ ओपन मार्केट, म्हणजे ओपन मार्केट केल्यापासून जवळजवळ 1 दशक 10 years कम्प्लीट होतात. ओके, एंडिंग ऑफ ऑलिगोपॉली अँड एंट्री ऑफ प्रायव्हेट सेक्टर इन्शुरन्स कंपनी. सो यात काय बघायला मिळालं की ऑलिगोपॉली जी आहे ती कमी झाली, ज्याच्यात खूप थोडे इन्शुरर्स असतात आणि इन्शुअर्ड पर्सन किंवा पॉलिसी होल्डर्स खूप जास्त असतात. आता इतक्या कंपनीज वाढत चालल्या आहेत, प्रायव्हेट सेक्टरने एंट्री केली आहे, सो ऑलिगोपॉली कमी झालेली आहे या सेक्टरमध्ये. अँड द रिजिम ऑफ न्यू डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीज, इन द सेन्स IRDA ची नव्या प्रकारे रिस्ट्रक्चरिंग झालेलं आहे आणि ते आर लाईक सेबी ऑफ इन्शुरन्स सेक्टर, इन द सेन्स ते रेग्युलेटरी बॉडी आहेत जसे सेबी शेअर मार्केट्सवर करतात. The industry continues to attract new capital, bearing a handful of mega risks. There is more than adequate capacity to cover all the risk within the market. However, the insurers are chasing premium and booking losses and working up unviable combined ratios. It is felt that the bottom has been reached and upswing in the rates it is inevitable. In the sense, जेव्हा आपण म्हणतो की मेगा रिस्क दिसून येतात मार्केटमध्ये, जरी इंश्योरेंस सेक्टर कमी रिस्क वाला फैक्टर असेल तरी बहुत ज्यादा रिस्क दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर विद इन द मार्केट. बहुत कॉम्पिटिटर्स भी बढ़ गए, ज्यादा प्रीमियम के लिए इंश्योरर्स जो है वो चेस कर रहे हैं, मतलब ज्यादा टारगेट अचीव करने का, और उसके साथ उनको लॉसेस भी ज्यादा हो रहे हैं. बुकिंग लॉसेस इन द सेंस जो अनवायबल कंबाइंड रेशोज है कि जो टारगेट सेट किए वो बहुत ही अनवायबल है, not practical targets, and that's why they are booking losses, and that's why it is felt that the bottom has been reached and the upswing in the rates is inevitable. In the sense ये rates में upswing होना जरूरी है, ऐसा लग रहा है कि हम बॉटम तक पहुंच गए. Let's see the key highlights. The significant growth in Indian life insurance market in the review period can be attributed to the key growth drivers such as population. का झालीये लाईफ इन्शुरन्स मध्ये इतक्या वर्षात ग्रोथ, तर त्याची कारण पुढे दिलेत. ओके, दे हॅव गिवन द रिझन्स बिहाइंड ग्रोथ इन इंडियन लाइफ इंश्योरेंस मार्केट. ओके, फर्स्ट इज पॉपुलेशन ग्रोथ, रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, लुक्रेटिव टैक्स बेनिफिट्स. अगर आप पॉलिसी लेते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, दैट्स व्हाई अट्रैक्टिव, दैट इज लुक्रेटिव टैक्स बेनिफिट्स. द राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम ऑफ इंडियाज मिडिल क्लास पॉपुलेशन एंड इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर इंश्योरेंस स्पेशली अमंग यंगर पीपल. सो यंगर पीपल लोगों में, मतलब आप जैसे आपसे बड़े लोगों में एक इंश्योरेंस लेने का अवेयरनेस बढ़ गया है फॉर देयर लाइफ टाइम सिक्योरिटी. और उनके बाद भी जीवन, मतलब क्या वो ऐसा ही था ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, राइट, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी. सो दैट वाज अबाउट अवेयरनेस वी आर गेटिंग. जैसे म्यूचुअल फंड से ये वाला एडवर्टाइजमेंट है, वैसे ये भी यहाँ के भी बहुत ही एडवर्टाइजमेंट होता है, राइट. हमने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे ऑलरेडी. हैव यू ever seen the advertisement of insurance companies? They are there. Let's see the next one. India is the world's 12th largest life insurance market and the 4th largest in Asia Pacific region. So India is the 12th largest market in the world in life insurance के लिए, और 4th largest in Asia Pacific region. इसका मतलब है हमें एक्चुअली हमारा पॉपुलेशन सबसे बड़ा है, फिर भी अभी तक हम 4th लार्जेस्ट बन गए हैं. हमें और भी
ऊपर जाने का मौका है. By 2016, it is expected to surpass South Korea to emerge as the third largest life insurance Asia Pacific market after China and Japan. So definitely we need to reach up to China, after China also. In 2010, the individual life insurance segment accounted for 74.8% of the total Indian life insurance industry, whereas the group life insurance market had considerably lower market share, 25.2%. In the sense, life insurance market का शेयर 25% ही है, 25.2%. फिर भी इनका जो इंडिविजुअल लाइफ सेगमेंट है वो बड़ा दिख रहा है, 74.8% का. Indian customers are increasingly demanding insurance product that offer assured income through annuities. तो इनको क्या चाहिए, सर्टन पीरियड के बाद एक इंश्योर्ड इनकम उनको मिलना चाहिए, ऐसा इंडियन कंज्यूमर का डिमांड है. एंड अकॉर्डिंग टू दैट उनको प्रोडक्ट डिजाइन करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को. डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्चुअरीज आर द पर्सन हु डिजाइन दोज प्रोडक्ट. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स सच एज bank assurance have gained significant market share in the review period. In the sense, ऐसे चैनल से significant market share review period में बढ़ गया. Okay, so let's see the recent trends in the insurance industry. Okay, recent trends, we can say first is challenging phase. At present, the general insurance market has 20 plus players already, and some more large international ones are expected to enter shortly. So already बहुत ज्यादा प्लेयर्स है, उसके साथ साथ और भी प्लेयर्स आने, मतलब क्योंकि हमारे मार्केट में पेनिट्रेशन की बहुत जगह है अभी भी, तो बहुत other player which are very efficient, they are going to enter in the market. Companies today are coming up with the new ideas to stand out, and they are offering the existing and prospective customers new technology platforms that would streamline the business and would also be beneficial to them. मैंने कल ही आपको बोला था, जैसे ICICI Lombard Insurance नाम का एक कंपनी है, जो ICICI and Lombard, I think they are in a joint venture or merger or amalgamation, something like that. So maybe merger. So what they are doing is they have given us app, simple, or in a one touch you can get their insurance. So that's kind of technological platform we are getting, क्योंकि अब like they want to attract their customers, they want to increase their customer base. क्योंकि मैंने जैसे बोला पेनिट्रेशन के लिए बहुत ही जगह है, हम सिर्फ 0.65% इन द मार्केट एज ए इंश्योरेंस कंपनी एक्वायर करते हैं. Okay, the industry is going through the challenging phase now because of the general economic slowdown, and the phase is expected to continue for some time. तेव्हापासूनच आहे ऍक्च्युली या पुस्तकात म्हटल्यापासून की इकॉनॉमिक ग्रोथ थोडी स्लो डाऊन झाली आणि दॅट्स वाय हे मार्केट एक्सपान्शन करायचा जे वेळ आहे त्याला वेळ लागण्याची शक्यता आहे. Okay, according to the industry experts, the market will grow by 18% per year, and in expected to reach rupees 1,000 billion by 2060. So the market growth per year would be 18%. That's estimated growth, and it will reach to the 1,000 billion by 2060. Now it's your turn to cross check if we have reached. Okay, let's see the second one. So पहला ट्रेंड में हम बोल सकते हैं there is a one trend that is a challenging phase, क्योंकि इकोनॉमिकल स्लो डाउन है. Okay, बहुत कंपनीज एंटर करिए, so it's challenging for us. Secondly, urban market is the major contributor. जनरली इसके बारे में अवेयरनेस, इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस ये अर्बन मार्केट में, अर्बन एरियाज में ज्यादा है, तो अर्बन मार्केट ज्यादा कंट्रीब्यूटर रहता है. Okay, in India, the urban market is the major contributor for the general insurance. Though the rural markets does not have any significant contribution to the sector, it is growing rapidly over the past few years and is slowly becoming a huge potential market for the general insurance in India. So rural market का ज्यादा contribution नहीं है, फिर भी
रूरल मार्केट भी बढ़ रहा है लेकिन अर्बन मार्केट भी ज्यादा बढ़ रहा है एंड बहुत ही पोटेंशियल दिख रहा है यहाँ पर पेनिट्रेट करने के लिए. टू कैप्चर द रूरल मार्केट, कंपनीज आर अडॉप्टिंग स्ट्रेटेजीज टू इंक्रीज अवेयरनेस लेवल अमंग द पीपल. जैसे मैंने बोला, रूरल एरिया में इंश्योरेंस के लिए अवेयरनेस इतना ज्यादा नहीं है. हेल्थ इंश्योरेंस क्यों चाहिए, फायर इंश्योरेंस क्यों चाहिए. आप अगर देखो यूएस जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में हर एक चीज है वो इंश्योर्ड रहती है. ओके जैसे कि अभी अभी हमें पता चला है कि मोबाइल्स भी इंश्योर्ड हो सकते हैं, लेकिन दैट इज सो न्यू फॉर अस कि हर एक चीज इंश्योर्ड होना. एंड मतलब ऐसा होता है कि जनरली अगर आप डेवलप्ड कंट्री में जाओ तो आपके हर एक चीज के लिए इंश्योरेंस है. अगर आपकी बाइक खराब हो जाती है आपको इंश्योरेंस से पैसे मिल जाते हैं, कार इंश्योरेंस के पैसे, घर इंश्योरेंस के पैसे, आग लगती है इंश्योरेंस के पैसे. फिर उसके बाद अगर आपका स्टोर बिजनेस उसको कुछ खराबी आती है, इंश्योरेंस के पैसे. अगर आप हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम है तो हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे. अगर आपका मतलब आपके कुछ हेड ऑफ द फैमिली को प्रॉब्लम होता है तो उनका जो लाइफ इंश्योरेंस होता है उनके पैसे. इन द सेंस उनका जो इंश्योरेंस मार्केट है, सोशल सिक्योरिटी मार्केट जिसे बोला जाता है, इट्स अ वाइडली or it is broadened and widely acquired by the insurance company because of the awareness that people have and the fear of future that the people have. Right now in Indian rural areas we don't have that kind of awareness for the not for the insurance companies or in need of insurance. Okay, this they are achieving through the increasing distribution level and access points. In the sense, that's why to make the big villages more aware, now the access points have been increased. लोग अप्रोच कर सकते हैं अदर एजेंट्स को, अदर कंपनीज को. थ्रू दिस डिस्ट्रीब्यूशन, थ्रू एडवर्टाइजमेंट लोगों को इंश्योरेंस के बारे में अवेयर किया जा रहा है. उनको बताया जा रहा है कि आपको नीड है इंश्योरेंस की, लेट्स टेक दैट इंश्योरेंस. बिजनेस जनरेशन थ्रू मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज द मेन एजेंडा फॉर दीज कंपनीज. मल्टीपल चैनल से बिजनेस जनरेट करना ये मेन एजेंडा है. Some of them are even adopting the cutting edge technologies like e-marketing and institutional marketing for deeper penetration in the rural market. So institutional marketing म्हणजे असा विचार करा की समजा मी आले तुमच्या क्लासमध्ये. ओके, इफ आय कम टू युअर क्लास अँड आय टोल्ड यू दॅट आय एम रिअली फॉन्ड ऑफ युअर क्लास. ओके, सो आय एम गिव्हिंग यू सम ऑफर. Whatever the thing dearest to you, I will insure you with that thing. In the sense, आपको सबसे अच्छी चीज जो लगती है उसके अगेंस्ट मैं आपको इंश्योर करूंगी उसके बदले में, क्योंकि दैट्स अ ग्रुप ऑन, इन द सेंस ग्रुप कूपन. ओके, मैं आपको पूरे ग्रुप को, आपके पूरे क्लास के लिए मतलब ये एक टाइप का मतलब ऑफर दे रही हूँ. तो ये आप ऐसा कर सकते हो. ओरिजिनली मेरे इंश्योरेंस की कीमत 100 रुपीज पर मंथ प्रीमियम है, लेकिन क्योंकि आप सब एक साथ में करोगे, अगर आपका नंबर 40 से मे बी आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं तो अगर 60 से आगे आपका नंबर जाता है इंश्योरेंस लेने वालों का, तो मैं आपको आधे दाम में इंश्योरेंस दूंगी, 50 एंड 50 रुपीज पर मंथ में आप वो इंश्योरेंस ले पाओगे. That's a good thing because I have penetrated 50 people or more than 60 people in single class. तो मेरे लिए फायदा तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको भी फायदा हो सकता है. सो दॅट इज अ इन्स्टिट्यूशनल मार्केटिंग. ई मार्केटिंग मतलब आपल्याला जे कॉल येतात ते बेसिकली किंवा इंटरनेटवरून कळतं ते किंवा मे बी जनरली पेपर्स मधून कळतं ते. सो तुमच्या लक्षात येत आहे या स्ट्रॅटेजीज आहेत डीपर पेनिट्रेशनसाठी. ओके, लेट्स सी. थर्ड वन इज niche marketing. Okay, or let's see what is a niche marketing. On the property and liability insurance segments, niche marketing and a competition for small and medium sized companies would be the challenge for next 2 years. म्हणजे छोट्या कंपनीसाठी मार्केट क्रिएट करणं, मार्केटिंग करणं आणि आपला बिझनेस वाढवणं हे खूप कठीण असणार आहे इन द नेक्स्ट 2 years. Or in these recent years, even in the lockdown, we can think that project insurance sector will continue to be the major workhorse with the continued economic development spurring investment in the power sector, manufacturing and other industries, road and buildings. So या सेक्टर मध्ये जेव्हा तुमचं डेव्हलपमेंट होत असतं एखाद्या डेव्हलपिंग कंट्रीमध्ये, रोड्स, रेल्वेज, पॉवर, सो ॲट दॅट पॉइंट
project insurance sector would be the major workhorse because त्या प्रोजेक्टच्या अगेन्स्ट तुमचा इन्शुरन्स होतो. सो रोड बिल्ड करायचा आहे, त्या रोड बिल्डिंगसाठी उद्या त्या रोडला काही झालं, त्यातल्या इक्विपमेंट्सना काही झालं, तर त्यातल्या माणसांना काही झालं, तर त्या अख्ख्या प्रोजेक्ट इन्शुरन्स जर काढलेला असेल देन यू गेट बेनिफिटेड. अँड दॅट्स वाय in a developing country there are multiple developing projects going on. Project insurance sector becomes the workhorse किंवा सगळ्यात major vital player. Okay, that's why yeah, I guess insurance with the right technical support and adequate capacity would be able to benefit from this segment. So that's why insurers जे ज्यांच्याकडे राईट टेक्निकल एफिशियन्सी आहे, ॲडिक्वेट कॅपिटल आहे, कपॅसिटी आहे, ते सगळेजण या फेजमध्ये बेनिफिशियल ठरू शकतात, त्यांना बेनिफिट्स मिळू शकतात. ओके, लेट्स चेक मेजर रोल बाय ब्रोकर्स अँड एजंट. ब्रोकर्स अँड एजंट म्हणजे जे आपले इन्शुरन्स एजंट असतात, वेगवेगळ्या कंपनीजचे वेगवेगळे असतात. ओके, who upgrade their technical competence are expected to play an increased role. Hence, it would be wise for insurance companies to support competent brokers and agents. So, already त्या एजंट्सकडे, ब्रोकर्सकडे अपग्रेडेड नॉलेज आणि स्किल्स असतात, कॉम्पिटन्स असते. अँड दॅट्स वाय त्यांच्याकडून एक्सपेक्ट पण केलं जातं की त्यांनी जो एक्सपान्शनचा, जो एफिशियन्सीचा, कॅपॅबिलिटीचा रोल आहे तो प्ले केला पाहिजे. हेन्स इट वुड बी वाईज फॉर इन्शुरन्स कंपनीज टू सपोर्ट कॉम्पिटंट ब्रोकर्स अँड एजंट. म्हणजे अशांना सपोर्ट करणं हे इन्शुरन्स एजन्सीचं काम असतं, इन्शुरन्स कंपनीचं काम असतं. These much needed intermediaries with help from insurer and reinsurer would have to take up to the major challenge of educating the under-informed customers in risk management and risk improvement. So in the sense या लोकांचं काम काय असतं, पहिली गोष्ट पेनिट्रेट करणं. ते लोकल एजंट्स असतात, त्यांना लोकल मार्केटची माहिती असते, लोकांची माहिती असते. सो त्या लोकांपर्यंत पोहोचवणं. हे जे इन्शुरर असणार आहेत, लाईक नॉट इन्शुरर, हे जे कोणी इन्शुअर्ड पीपल असणार आहेत, पॉलिसी होल्डर असणार आहेत, त्यांना पुन्हा पुन्हा पॉलिसी घेण्यासाठी अवेअर करणं, त्याबद्दल माहिती पुरवणं, त्यातले जे बदल होत आहेत त्याविषयी सगळी माहिती देणं. दॅट्स देअर वर्क. दॅट्स वाय हे इंटरमिजियरीज या मार्केटमध्ये खूप उपयोगी पडतात. आपण बघितलं ऍग्री बिझनेसमध्ये, ऍग्रिकल्चर बिझनेसमध्ये इंटरमिजियरीज आता खूप मोठा लॉस कॉज करतात. वेर ॲज आय कॅन से दॅट इंटरमिजियरीज इन द इन्शुरन्स मार्केट आर द ओनली, not the only, but are one of the most important reason behind the profits of insurance companies. ते खूपच प्रॉफिटेबल असतात. Accept more reasonable policies, deductibles and seek better policy coverage. So या सगळ्या गोष्टींबद्दल त्यांना नॉलेज द्यायचं असतं त्यांच्या पॉलिसी होल्डरला. And that's why they play major role as a broker or agent. Okay, so we have seen 4 points as a trend. Let's see the be happy and start learning. Okay, the 5th is newer pricing method. तो इंश्योरेंस का प्राइस कोट करने के नए नए मेथड्स मार्केट में डेफिनेटली आते रहते हैं. सो लेट्स सी, it is one of the trend, right? Newer pricing methods need to be developed for commercial lines. Underwriters should give up the old tariff based approach and develop the experience based and एक्चुरियल सपोर्टेड मॉडल्स फॉर प्राइसिंग. सो जो एक्चुरीज रहते हैं वो रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत ही अच्छे प्लेयर्स रहते हैं, और उन्होंने सपोर्ट किया हुआ मॉडल जो ऑलरेडी आपने एक कैलकुलेटिव मोड में, मैथमेटिकल मोड में बनाया है, उसका प्राइसिंग करके वो बहुत ही अच्छा और प्रॉफिटेबल रहता है फॉर द कंपनी. मोस्ट ऑफ द लार्ज रिस्क्स हैव ऑलरेडी वेल डेवलप्ड रिस्क मार्केट डिपार्टमेंट्स एंड डिप्लॉय ERM, दैट इज एंटरप्राइज रिस्क मॅनेजमेंट टेक्निक्स विथ द राईट प्राइसिंग. म्हणजे खूप साऱ्या कंपनीजकडे त्यांची स्वतःची रिस्क मॅनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑलरेडी आहेत, अँड दे हॅव डिप्लॉय द ERM इन द सेन्स enterprise risk management techniques through their work with the right pricing capacity. This segment still offers good picking. The SME, small and medium enterprises sector property needs careful cherry picking and
right marketing approach would yield dividends. So त्यांनी करेक्ट प्राइसिंगची मॉडेल जर घेतली, मग अशी म्हटलं असं, मी तुम्हाला तुमच्या क्लासला पूर्वी 100 रुपयाचा इन्शुरन्स जर 50 रुपयाला विकायला तयार झाले असेल, तर अचानक 50% मी कसे काय कमी करू शकते याबद्दल तुम्ही मला वेड्यात काढूच शकता. बट व्हॉट यू आर नॉट कन्सिडरिंग इज द पेनिट्रेशन आय एम डुईंग. आणि एकदा तुम्ही 1 वर्ष इन्शुरन्स काढलात की त्याचे फ्युचर बेनिफिट असेल की माझे तेवढ्या लोकांशी कॉन्टॅक्ट वाढला, राईट. मी त्या लोकांना परत परत पेनिट्रेट करत राहणार, दुसऱ्या गोष्टींसाठी, इन्शुरन्ससाठी मी त्यांना अप्रोच होत राहणार. ऑब्व्हियसली माझं मार्केट एक्सपांड होतं. सो दिस इज द पॉइंट वेअर तुमचे प्राइसिंग कामाला येत. ओके, लेट्स सी द 6th वन, कॅटास्ट्रॉफ रिस्क मार्केट सिस्टीम. ओके, catastrophe risk or not market management system has to become robust as the insurance spreads in the semi-urban and rural areas. With increased penetration, rapid economic development in rural areas, insurance companies will face losses from events like floods, catastrophes in the interior, which hitherto have not produced significant insurance losses. So specifically, कॅटास्ट्रॉफ रिस्क मॅनेजमेंटमध्ये काय आपण बघतो की सेमी अर्बन आणि रुरल एरियाजमध्ये रोबस्ट इन्शुरन्स स्प्रेड करण्यासाठी जेव्हा असं पेनिट्रेशन वाढेल, लोकांपर्यंत जास्त रीच होईल, तेव्हा रॅपिड इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट इन रुरल एरिया जेव्हा आता होतीये किंवा होणं अपेक्षित आहे, तेव्हा इन्शुरन्स कंपनीज लॉस फेस करायला लागतील. पण जेवढा मार्केट रीच झालाय त्यांचा, तेवढं मार्केट रीच बघता तो लॉस त्यांना खूप मोठा नसेल. तो लॉस त्यांना त्यांचं सर्व्हायवल धोक्यात आणणार नाही. इट इज व्हायटल फॉर इन्शुरर्स टू मॉनिटर देअर ॲग्रिगेट एक्सपोजर्स क्लोजली अँड बाय ॲडिक्वेट कॅटास्ट्रॉफ प्रोटेक्शन. Choices of India's specific CAT modeling software tools are now available and most of the insurers are using these tools. सो अशा प्रकारची इंडिया स्पेसिफिक कॅट मॉडेलिंग सॉफ्टवेअर टूल्स अशी अवेलेबल आहेत आणि खूपशा इन्शुरर कंपनीज ही टूल्स वापरतात. डेफिनेटली विथ द इन्क्रीज्ड अवेअरनेस इन दीज एरियाज, इन्शुरर्स आर बाईंग मोर अँड मोर कॅटास्ट्रॉफिक कव्हर. Notably, the cover being purchased has increased from 100 years to 250 years return period cover. So हे कव्हर ज्याच्या कॅटास्ट्रॉफिक कव्हर हे जे इन्शुरर इन द सेन्स तुमच्या इन्शुरन्स कंपनी अडॉप्ट करतात ते 100 ते 250 इयरसाठी असतं. त्यामुळे त्यांना होणारे लॉसेस हे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर त्यांच्या सर्व्हायवलला अफेक्ट करत नाही. ओके, लेट्स सी हेल्थ इन्शुरन्स सेगमेंट. Health insurance is the lucrative segment. It is poised to record the massive growth in India in the coming years. Definitely, मी म्हटलं तुम्हाला आत्ता मला खरंच खूप मी बघते आपलं ब्रेक झाल्यावरती याच्यात की मला असं कुठे सापडतं काही हेल्थ इन्शुरन्स वरती झालेला एफेक्ट बद्दल काही. बट हेल्थ इन्शुरन्स सेक्टर हे कारण अवेयरनेस, क्योंकि हमारा जो अवेयरनेस है टुवर्ड्स हेल्थ, टुवर्ड्स लाइफ इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. It's becoming more exposed market. Okay, half of the country's population is expected to come under the health insurance umbrella in the next 7 years, according to the Ernst & Young study. A mere 12% of the population is currently covered by the healthcare. Right now, just 12% is covered under healthcare. According to the Economic Times report, the government's proposal to scale up the foreign direct investment (FDI) in the insurance sector from 26% to 49% that we have seen during the FDI lectures will boost the healthcare business. इन दिस म्हणजे जेव्हा एफडीआय मध्ये ही वाढ होतीये आणि इन्शुरन्स मार्केट ओपन केलं जातं एफडीआय साठी, 26% ची परवानगी होती, आता ती 49% ची झाली आहे. सो इट हॅज boosted the health line business. Okay, in this coming years, India might witness more standalone healthcare companies to कारण मी थांबलीये बोलायचं, तुमचा आवाज येतोय म्हणून. सॉरी.
FDI insurance sector from 26% to 49% will boost the health line business. In the coming years, India might witness more standalone healthcare companies too, as they will have an edge in the future market scenario. So अशा नवीन कंपनीज पण आपल्याला बघायला मिळतील ज्या हेल्थकेअर बिझनेसमध्ये जातील, कारण फ्युचरमध्ये या हेल्थकेअर बिझनेसला खूप जास्त मागणी असणार आहेत, सेज अन इंडस्ट्री एक्सपर्ट. The recent development in the general insurance sector is the activities by the insurance regulator. So ही जी रिसेंट डेव्हलपमेंट आहे जनरल सेक्टरमध्ये, या इन्शुरन्स रेग्युलेटरच्या ऍक्टिव्हिटीजमुळे किंवा या रेग्युलेटेड केल्या जातात IRDA कडून. The IRDA has been very stringent and has been keeping the close watch on the functioning of all insurance companies. So IRDA अतिशय stringent म्हणजे स्ट्रिक्ट राहून क्लोज वॉच करताय. The latest regulation from IRDA is on health insurance portability. In the future, general insurance industry will be very much in the limelight than any other industry facing recession now. So आत्ताच्या काळात जेव्हा भरपूर रिसेशनचा किंवा लॉकडाऊनचा खूप जास्त इकॉनॉमिक परिणाम झालेल्या कंपनीज आहेत, त्या काळातही इन्शुरन्स ही फ्लरिशिंग मोडमध्ये आहे इंडस्ट्री. अँड बाय द अपकमिंग इयर, कारण लोकांना प्रचंड भीती वाटत असते, प्रचंड रिस्क वाटत असते, अनसर्टन असतात ते फ्युचरबद्दल, ही इंडस्ट्री कायम ग्रोथ होत राहील असं एक्सपर्ट्सचं म्हणणं आहे. ओके, लेट्स सी. Wow, that's the 8th point we are going to see. Online selling. Online selling is of insurance policies to discerning customers who access the internet will gain momentum. So आपण मला वाटतं ऑनलाईन बद्दल कालच बोललो होतो, जर तुम्हाला आठवत असेल तर, की डेफिनेटली ऑनलाईन इंडस्ट्री, ऑनलाईन मार्केटिंग, ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन्स हॅज चेंज्ड द प्लॅटफॉर्म फॉर एव्हरी फायनान्शियल ऍक्टिव्हिटी, आणि त्याचा इम्पॅक्ट ऑनलाईन सेलिंग, ऑनलाईन पर्चेसिंग मध्ये येतोच आहे. ओके, the major part is micro insurancing. Okay, so micro insurance, still recently micro insurance on the lines of microfinance, ज्याच्याबद्दल आपण बोललो होतो, जर तुम्हाला आठवत असेल तर, मायक्रो फायनान्स बद्दल, जेव्हा आपण मायक्रो लोन्स वगैरे बोलत होतो, मायक्रो क्रेडिट्स इन द ऍग्रिकल्चर बिझनेस. सो in the lines of microfinance is thought to be magic word, and insurer planned to bring retail production to suit this segment. ओके, इन्शुरन्स सेक्टर पण एकदम त्या सेक्टरमध्ये, त्या टाईपच्या मायक्रो फायनान्स मध्ये घुसण्यासाठी एकदम आतुर, एक्साइटेड आहे. ओके, अनदर एरिया ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी इज द गव्हर्नमेंट इनिशिएटिव्ह इन द हेल्थ कव्हर्स फॉर द पॉप्युलस. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBI scheme covers sponsored by states and central governments are providing huge opportunities to insurers. While these schemes provide volumes, pricing and claims management is a critical for success. So या स्कीम्स जशा असतात गव्हर्नमेंटच्या, त्या तुम्हाला जास्त प्रमाणावर पेनिट्रेशन देतात मार्केटमध्ये, तुम्ही रीच आउट करू शकता लोकांपर्यंत, पण ऍक्च्युली व्हॉल्युम्स, प्राइस आणि क्लेम मॅनेजमेंटमध्ये हे कॅल्क्युलेट करणं, त्याची सक्सेस होणं हे थोडंसं क्रिटिकल असतं. दो दे सक्सीड, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. Okay, expectation of the best in the class service. The Indian customers are demanding and expect best in the class levels, so that the entire insurance industry will have to work towards the becoming more customer centric in areas of product development, policy issuance and as well as claim settlement. So थोडक्यात जे काही आहे ते त्या लोकांच्या मागणीप्रमाणे, मागणी तसा पुरवठा, व्हॉट एव्हर इज डिमांडेड यू शुड प्रोव्हाइड दॅट. ओके, सो दॅट काइंड ऑफ प्रिन्सिपल मस्ट बी युज्ड. Customer centric attitude that so many banks has acquired this attitude, right? We have already seen customer centric attitude of banks. Now insurance sector would have to focus more as being customer centric. Okay, so that was about these what we can say, the features. Yeah, they would need to constantly do market research and to update the product services processes to keep up with the changing needs of the customers.
completion of 10 years under new regime opens up the opportunity for those private sector insurance companies which started in 2001. So जैसे ही हमारा मार्केट ओपन हुआ, जो कंपनीज 2001 में स्टार्ट हुई थी उनके लिए ये बहुत ही अपॉर्चुनिटी वाला, क्योंकि वो सेट हुई है अभी 10 साल में मार्केट में, उनके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक है ये सिनारियो. अकॉर्डिंग टू द लॉ, they will become eligible to raise the capital from public and make IPOs, initial public offerings. So लॉ के हिसाब से ये अपना अभी कैपिटल बढ़ा पाएंगे 10 साल खत्म होने के बाद, और उसके साथ साथ अपना आईपीओ भी स्टार्ट कर पाएंगे. ओके, मतलब पब्लिक ऑफर कर पाएंगे ये. Obviously, the promoters would want to scheme the cream, but timing of an IPO is crucial, and more importantly, to present the right financial and strong balance sheet is imperative. तो ये आईपीओ का टाइम सही होना, हमने देखा था आईपीओ के बारे में जब थियरी देखी थी कि सही टाइम पे पेनिट्रेट करना बहुत ही जरूरी होता है, और इसकी वजह से हमें आईपीओ मैनेजर को भी हेल्प लेनी पड़ती है. सो मुझे पता है आपका टाइम खत्म होने वाला है, 1 मिनट ही बचा है. वी आर गोइंग टू रीस्टार्ट अगेन. सो प्लीज रीस्टार्ट अगेन जैसे ये मीटिंग खत्म होता है. ओके, वी कैन स्टार्ट विद द, आई गेस, यप, की इश्यूज एंड चैलेंज देख सकते हैं तब तक. सो आपके लिए जो रीसेंट ट्रेंड्स